Hello students, welcome back to TMI's home-based education. Today we are going to start with chapter number 6, that is decimals, which you had already studied in class 4 also. So just we'll revise it. What does a decimal means? Decimal means it is a part of a whole. ठीक है, वो एक पार्ट होता है जो पूरा नंबर होता है, पूरा नहीं होता है, उसका एक पार्ट हो जाता है. So decimal, it is represented as point. So point के बाद जो फर्स्ट डिजिट होता है दैट इज कॉल्ड एज टेंथ्स. THS लगता है. नॉर्मली यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं, बट देयर इट इज कॉल्ड एज टेंथ्स. मीन्स दैट नंबर इज बीइंग डिवाइडेड बाय 10. देन कम्स हंड्रेड्स विच इज एट सेकेंड प्लेस. मीन्स डेसिमल के बाद जो सेकेंड प्लेस पे जो डिजिट होता है दैट इज एट हंड्रेड्स प्लेस, विच मीन्स इट इज डिवाइडेड बाय हंड्रेड. Third digit after decimal is at thousands place, means it is divided by 1000. Normally जो हमने इंडियन सिस्टम पढ़ी थी, in that normally it starts from ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore and 10 crore. But in decimal जैसे यहाँ से वंस टेंस चालू होता है, यहाँ पे वंस नहीं होता. इट स्टार्ट्स फ्रॉम टेंथ्स, देन हंड्रेड्स एंड देन थाउजेंड्स. लाइक दैट इट विल गो. देन 10,000. सो वो उल्टा चलेगा, इट विल बी गोइंग इन द राइट साइड. और नॉर्मली जो हम नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम वंस, टेंस, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore and 10 crore. It goes on. So this is just the table that I had drawn. It is just to give you the background of decimal. So ये टेबल अभी भी एक्सटेंड हो सकता है 2000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore and 10 crore. But as the space was limited, just खाली एक्सप्लेन करना था कि ये जो डिजिट्स होते हैं पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले, दे ऑल आर द होल नंबर्स. मीन्स वो पूरे नंबर्स है. दिस आर द पार्ट ऑफ इट. ओके, जो पूरा नंबर नहीं हो रहा है उसका ये पार्ट है. और जो डेसिमल के लेफ्ट साइड है, दे आर ऑल होल नंबर्स. मीन्स वो कंप्लीट नंबर्स है. और जो कंप्लीट नंबर नहीं हो रहा है उसके पार्ट्स जो होते हैं, दे आर रिटन आफ्टर डेसिमल पॉइंट. डेसिमल और यू कैन से आफ्टर पॉइंट. इट कैन बी सेड बोथ. सो इफ आई राइट लाइक 347 पॉइंट, सो आप रीड क्या करोगे? नॉर्मली किसी को भी रीड करने को बोला तो क्या करेगा? 347.75. बट दैट इज़ द रॉन्ग वे टू से व्हेन यू आर सेइंग एनी डेसिमल नंबर. डेसिमल नंबर जब बोलते हैं तब डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स होता है उसको सेपरेटली बोलना है. इसको रीड कैसे करना है? 347.75, नॉट 75. 75 है हमें पता है, बट जब आप रीड करोगे तो एक एक डिजिट को सेपरेटली रीड करना है. अगर 3 डिजिट्स है तो 752, लाइक फॉर एग्जांपल इफ इट इज़ देयर, नॉट 752. दैट इज़ द रॉन्ग वे टू रीड द डेसिमल नंबर. जब डेसिमल नंबर रीड करना है तो डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स है उसको सेपरेटली प्रोनाउंस करना है. That you have to remember. So what it will be read as 347.75, not 75. So when you will read it in this manner only, 75, not 75. 75 when you are reading it is wrong. So nothing hard is being there. Already you are knowing about decimals. Just be careful when the decimal point is being there. उसके बाद जो digits है उसको read कैसे करना है? separately. Okay, और एडिशन के टाइम पे that we will come in the next topic. But here just the beginning of the chapter. decimal means just मैंने बोला वो complete number नहीं हो रहा है, उसका एक part हो रहा है. और decimal के जो left side है, they are the complete numbers. means they are whole numbers and they are called as whole numbers, or you can say it as integral part. इसको हम integral
part or number, or you can say as whole numbers. कौन सा डेसिमल के जो लेफ्ट साइड है, and this will be called as decimal number. So this you have to keep it in mind, because in the next exercise, means the first exercise, that will be asked, that's why. So decimal के जो left side है, that will be called as an integral part, or it can be called as a whole part or a whole number, means that will be the complete number. decimal के बाद जो है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि वो complete नहीं है, that's why it is forming the decimal number. Okay, so that was regarding decimal. Now let us move directly to the exercise number 1. In the exercise first, question number 1, if you will see, it is given, read the following decimal fractions. So decimal fractions जो दिया है उसको read कैसे करेंगे, जस्ट मैंने यहाँ पे जो लिखा है वैसे ही read करना है उसको भी. 2.53. So how we will read 2.53. जैसे रीड करना है वैसे उसको लिख देना है इन द वर्ड फॉर्म. दैट्स इट व्हाट वी हैव टू डू इन क्वेश्चन नंबर 2. सो 9.07. सो व्हाट वी विल राइट 9.07. Third is 0.135. so the same thing we will write 0.135. So student, this thing you have to keep it in mind. The fourth one you have to do it by yourself. इसमें क्या करना है, जस्ट ये प्रोनाउंसिएशन जो मैंने बोला, आफ्टर डेसिमल यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी डिजिट एज सिंगल. अभी से आदत डालोगे तो इन द हायर क्लासेस इट विल बी नॉट अ डिफिकल्टी. 53 नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है 5307.135, नॉट 135. वो हमें पता है वो 135, बट जो डेसिमल के बाद होता है, अगर वो डेसिमल के पहले होता देन वी वुड हैव रेड, जैसे यहाँ पे कैसे किया था 347, बिकॉज इट वॉज before decimal, means this is the complete number, this is the part of the number, that's why it will be read as separately 5307.135. done. So fourth one you have to do it by yourself. Now the next question number 2, you have to do it by yourself in the textbook only, with the help of pencil only you do it. टेक्स्ट बुक में जो भी करते हो यू डू इट विथ पेंसिल. डेसिमल नंबर्स आर बीइंग गिवन एन इंटीग्रल पार्ट इन द डेसिमल पार्ट. इंटीग्रल पार्ट कौन सा होता है मैंने अभी समझाया था. डेसिमल के पहले वाला दैट विल बी इंटीग्रल पार्ट, और इट विल बी कॉल्ड एज अ होल पार्ट ऑल्सो. सो हियर बिफोर डेसिमल 9 इज बीइंग देयर एंड आफ्टर डेसिमल 5 is there. So integral part is 9, decimal part is 5. Here integral part is what 0, decimal part is 435, 4.276. so 4 as integral part and 276 as decimal part. So this is what you have to do it. Now the next is question number 3, where we have to write the expanded form. Now how to write the expanded form, that we will do it. So question number 3, it is given first as 7.5. Now 7.5 we have to write it in expanded form. So as in the table also मैंने बोला था क्या, डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट होता है इट मीन्स इट इज डिवाइडेड बाय 10. सो एक्सपांडेड फॉर्म हम कैसे लिखते थे प्रीवियसली ऑल्सो, द सेम वे वी विल राइट डाउन हियर ऑल्सो. सो 7 plus 5.5 is there, so we can write it as 5/10. Understood? This is the expanded form. Second one, if we see, it's 0.364.
4. So it can be written as, no need to write 0. जैसे आप डिवाइड करोगे the answer will come in point only. So 0 वैसे भी मैंने expanded form में क्या बोला था, we have to skip if it is being given. So here after decimal what is being there, 3. So 3 is at first place, it means it is at tens place. So upon 10 plus 6 upon 100 plus 4 upon 1000, because it is at third place. So here you have to be careful. 0 है, that's why we had not written, we had directly written 3 upon 10, 6 upon 100 and 4 upon 1000. So when you will add it, automatically the decimal point will come. Third one is 25.976. So 25 we can write it as 20 plus 5 plus what, 9 upon 10 plus 7 upon 100 plus 6 upon 1000. Simple as that. We can write it in this manner. फिर अगर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी करना है तो कर सकते हैं. हियर इट विल कम as 10, 10 to the power 2, 10 to the power 3. Here also 10 to the power 2, 10 to the power 3, if you want to write in the expanded form. So 3 I had done, remaining you have to do it by yourself. It's very simple. Now question number 4. First one, it is given, write each of the following as the decimal fraction. First one is what, 3 plus 0.6 plus 0.09. This is the thing which is being given. We have to write it in the decimal number. So what we will do, देखो 3 whole number है, point कहाँ से start हो रहा है, यहाँ से. So we'll write 3 as it is. Point, after point the first digit comes, that is 6. Here 9 is at the second place, first place is empty. So what will come here now, 9. Okay, this is how we have to write down. Second one, if we see, it's 70 plus 2 plus 0.04 is being given. Okay, so 70 plus 2, it becomes 72.04. Simple. Third one, 8 plus 0.9 plus 0.06 plus 0.005. So 8 is whole number for integral part, so we'll write 8 as it is. After point the first digit is 9, second digit क्या आ रहा है, 6, and the third digit comes as 5. So this is our decimal number, that is 8.965. Fourth one, it's 700 plus 50 plus 6 plus 0.08. So 70 plus 50 is 750, 750 plus 6 is 756.08 is our answer. Fifth one, it's 20 plus 0.008. So the answer which will be formed will be 20.008. Nothing hard is being there, students. If you will try, it's simple. Then sixth one, it is given that 6 ones plus 2 tens. Now this type of thing is being given just to confuse you. Okay, so 6 ones means it is a whole number or an integral part. Then it's being written that 2 tenths means tens कब आता है, tenths after decimal it is coming. So what we will write, 6 ones means 6.2 tenths means after decimal just the digit will come, that is tenths, so it will become 6.2. Seventh one is 9 tenths
plus 7 ones plus 6 tenths plus 8 hundredths. So 9 tenths means 90. 7 ones means 7. So 90 plus 7, it will become 97. Now 0.6 tenths. So 6 will be written first. 8 hundredths. So 8 at hundredths place. So this is the digit which will be formed. This is just written in this manner to just confuse you. Otherwise it is very simple. Eighth one, it's given 4 ones plus 2 hundredths. So 4 ones means it's 4. Now 2 hundredths means 2 is at hundredths place, means 10th place is missing. Direct hundredths दे दिया है, means 100 means after decimal second digit, not first. First is not given, it is missing. So what we will write, जहाँ पे missing होता है, what we used to write there, 0 and 2 at hundredths place. So 8 sums I had done, only 2 sums I am giving you to do it by yourself. So this was just the beginning of the chapter decimal, and we completed exercise number first in that. Very simple. If you have any doubt or anything you have not understood, we will discuss it again in the Google Meet. So the remaining sums you have to do it. In the next video, we will move further in this chapter with addition of decimal numbers. So till then, thank you and take care.